Good evening students. Today we will start coordinate bond. What is coordinate bond? Let us see. Nitrogen atom has 5 electrons in its valence shell. It can be represented like this. It has 5 electrons in its valence shell. In order to complete the octet structure, it needs 3 more electrons. And these 3 electrons are provided by the hydrogen atoms, by the 3 hydrogen atoms. When this nitrogen atom combines with the hydrogen atom, so both the nitrogen and hydrogen atom then becomes stable. See, when it combines with hydrogen atom, then hydrogen becomes stable because it completes their duplet structure, and nitrogen also becomes stable because it has its octet structure now. It has 8 electrons in its valence shell now. So nitrogen becomes stable, and hydrogen has 2 electrons in their valence shell. So hydrogen also becomes stable. This is the formula of ammonia, NH3, which is formed between nitrogen and hydrogen atom by the sharing of electrons. Now here we see two types of electrons are present in this ammonia. One is this lone pair of electrons. This is called lone pair of electrons. Lone pair of electrons are those which is not bonded to any other atom. जो किसी भी दूसरे एटम से कंबाइंड नहीं होते हैं, अकेले जो होते हैं, जो किसी से कंबाइन नहीं किए होते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. दैट इज नॉट बॉन्डेड टू एनी अदर एटम. दैट इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज वो शेयरिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं. एंड हेयर 3 shared pair of electrons are also present. These are the 3 shared pair of electrons. Shared pair of electrons, or it is called bonding pair of electrons. Since these electrons are bonded between 2 atoms, क्योंकि ये 2 atoms के बीच में sharing का काम कर रहे हैं, bonding का काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको shared pair या bonded pair of electrons कहा जाता है, and this is called lone pair of electrons. So now we are studying the formation of coordinate bond. For the formation of coordinate bond, we need a species which has at least one lone pair of electron. जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, एक स्पीसीज ऐसी होनी चाहिए. एंड इन अमोनिया नाइट्रोजन हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So it is the first requirement for the formation of coordinate bond. The second requirement for the formation of coordinate bond is that the second species must be short of at least one lone pair of electrons. दूसरी स्पीसीज वो हो जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, which is short of one pair of electrons. Which is short of one pair of electrons. That means कि दूसरी स्पीसीज में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए. We know a hydrogen atom has 1 electron in its valence shell. When it loses its electron, then it becomes H plus ion. H plus ion, that means it has no electrons. And in order to complete the duplet structure, it needs 2 electrons. That is, it is short of 1 pair of electrons. 2 electrons उसे चाहिए. That means कि एक pair of electron उसे जरूरत है H plus ion को. तो so the second species is H plus ion. तो हमारे 2 species कौन से हो गए for the formation of coordinate bond is, first is ammonia, because ammonia has one lone pair of electrons present in nitrogen atom. And second species is H plus ion because it is short of one pair of electron. So these two can bond together. See how the formation of this coordinate bond takes place. This is ammonia molecule. This is ammonia.
and it combines with H plus. Nitrogen has one lone pair of electrons in this ammonia, and second one hydro H plus, it is short of one pair of electron. So these two can bond together and form NH4 plus ion, that is ammonium ion. And this H plus, these two electrons ये दोनों ही कहाँ चले जाएंगे, इस हाइड्रोजन के पास. ये हाइड्रोजन इन दोनों एटम को ले लेगा. This pair of electron is shared by both nitrogen and hydrogen. This pair of electron is shared by both the nitrogen and hydrogen atom. See this, it is incorrect now. We can represent it like this. Always remember, ये जो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज था, यहाँ पे हाइड्रोजन पे we do not show the positive charge. The plus charge of hydrogen is taken by the entire compound. Now the plus charge, it becomes overall positive, and this lone pair of electron is shared by both nitrogen and hydrogen atoms. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन के पास थे, it is shared by both the atoms. Now nitrogen is also stable because it has the octet structure. It has its octet structure complete. It has 8 electrons in its valence shell, and this hydrogen H plus ion, which is short of one pair of electron, it also becomes stable. It also completes its duplet structure by sharing this pair of electron which is given by nitrogen. So here the formation of coordinate bond takes place. This bond between nitrogen and hydrogen is called coordinate bond or dative bond. Coordinate bond. This coordinate bond is represented by the arrow. It is coordinate bond, and these three bonds are called covalent bond. These are the covalent bond. Covalent bond is shown by a single bond, and this coordinate bond is shown by an arrow. Here two types of bonds are present, covalent bond and coordinate bond. Coordinate bond वो है जिनमें ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ये हाइड्रोजन जो है वो ले लेगा, मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों ही इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, बट हाइड्रोजन इज नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग टू नाइट्रोजन. Sharing of electrons takes place in covalent bond also, and sharing of electrons takes place in coordinate bond also. But the difference between the two is कि in covalent bond the electrons are shared by both the atoms. Both the atoms, that is here nitrogen and hydrogen, both atoms are sharing equal number of electrons. नाइट्रोजन ने और हाइड्रोजन ने अपने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, बट इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड द sharing of electrons takes place between the two atoms, but the pair of electron which is shared between the two atoms is provided by only one atom. जो pair of electron sharing हो रही है दोनों atoms के बीच में, वो सिर्फ एक ही atom दे रहे हैं. वो खुद भी ले रहा है और वो दूसरे को भी दे रहा है, but the second atom, that is here hydrogen atom, is not providing anything to nitrogen atom. शेयरिंग इक्वल नहीं हो रही है. कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग दोनों एटम्स के बीच इक्वल होती है, बराबर शेयरिंग होती है, बट इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग दोनों एटम्स के बीच नहीं होती है. ओनली नाइट्रोजन एटम इज प्रोवाइडिंग both the electrons to this hydrogen, and nitrogen is also using its electrons, खुद भी वो यूज कर रहा है. That means nitrogen and hydrogen are sharing its lone pair of electrons
with themselves, but hydrogen is not giving anything to this nitrogen atom. So इनके बीच जो bond बनेगा, this is called coordinate bond. Coordinate bond. Here दो चीजें प्रेजेंट होंगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में. एक होते हैं डोनर एटम और दूसरे होते हैं एक्सेप्टर एटम. डोनर एटम वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, दैट मीन्स कि शेयरिंग कर रहे हैं, जो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, दे आर कॉल्ड डोनर एटम. इन दिस अमोनियम आयन, नाइट्रोजन इज द डोनर एटम and the acceptor atom which accepts the electrons given by the other atom, and hydrogen here is the acceptor atom. तो donor और acceptor दोनों ही इसमें present है. तो coordinate bond क्या है? This is ammonium ion, NH4 plus ion. It is an example of coordinate bond. The formation of ammonium ion takes place like this. This is ammonium ion. So the coordinate bond कौन से bond है? The bond formed by the sharing of electrons provided entirely by one of the combining atoms but shared by both. जो sharing हो रही है electrons की, वो सिर्फ एक ही atoms share करेंगे, but दोनों ही उससे share करेंगे, but देगा सिर्फ एक ही atom. दूसरा atom उसके बदले कुछ भी उसे वापस नहीं देगा. दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. शेयर दोनों करेंगे, बट शेयरिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा वो सिर्फ एक ही एटम होगा. इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने वाले एक एटम है, बट शेयर करने वाले दोनों एटम्स हैं जो उसे मिलके शेयर कर रहे हैं. इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन. Take another example of coordinate bond. Another example is C. Oxygen atom. Oxygen atom has 6 electrons in its valence shell. It can be represented like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6. In order to complete its octet structure, it needs 2 more electrons, and it is bonded to 2 hydrogen atoms for this. Now it is the structure of water. We can represent it like this also. H2O, it is water, and it has lone pair of electrons present in it. For the formation of coordinate bond, we need a species which has at least one lone pair of electron present in it, and here water has at least one lone pair of electron present in there. And second species जो ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक pair of electron की कमी हो, that is H plus ion. It has 2 electrons short, so these two can bond together again, and the formation of hydronium ion takes place. The formation of hydronium ion takes place. Hydronium ion is H3O plus ion. This H, O, H, and this hydrogen H plus, ये किसी भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ हम दिखा सकते हैं, या ऊपर या नीचे. मैंने इसे नीचे रिप्रेजेंट किया है इस H को, और ऊपर अभी भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय 2 डॉट्स. एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज पूरे इंटायर कंपाउंड ही अब इस पॉजिटिव चार्ज ऊपर इसके प्रेजेंट होंगे. सिर्फ H पे ये प्रेजेंट नहीं होगा पॉजिटिव. द ओवरऑल कंपाउंड बिकम्स पॉजिटिव नाउ, सो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. This is the structure of hydronium ion. This is the structure of hydronium ion H3O plus ion. It is represented like this also. You have to represent it like this also. Sorry. It is, ये दोनों electrons कहाँ गए? इधर चले गए. So the arrow shows the coordinate bond. And the 2 dots here shows the lone pair of electrons which is still present in the oxygen atom.
This is hydronium ion. This is the correct structure of hydronium ion. You can show it like this. This is hydronium ion. This is also an example of coordinate bond. Coordinate bond क्यों हो रहे हैं coordinate bond यहाँ पे? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन था मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया था, सॉरी, तो मैं अब इसको इधर यहाँ रिप्रेजेंट करूंगी क्योंकि ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे. ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला था जैसा मैंने बताया. दैट इज व्हाई इट इज शोन बाय द एरो एंड दिस एरो शोज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दिस इज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड. And these two bonds present between oxygen and hydrogen are covalent bond, and this is the coordinate bond. And this whole structure, this whole compound is called hydronium ion, H3O plus ion. So it is the second example of coordinate bond, and these two dots must be shown because it is the lone pair of electron which is present in the oxygen atom. इस oxygen में दो lone pair of electrons थे, एक पे तो H आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन बन गया, और एक अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है हाइड्रोनियम आयन में. एक चीज और याद रखिएगा कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें तीनों तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कोवेलेंट, आयनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दैट कंपाउंड इज अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl. ऑलवेज रिमेंबर, very important question, it is ammonium chloride. Ammonium chloride has all the three types of bonds present in it. As you have seen, ammonium ion, NH4 plus ion has covalent and coordinate bond. Covalent bond भी होते हैं and coordinate bond भी उसमें present होते हैं. When this ammonium ion, NH4 plus ion, combines with Cl minus ion, then this cation and anion जब साथ में आएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में? वो होगा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज आयनिक बॉन्ड. सो दिस कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड contains all the three types of bonds, that is covalent, coordinate and ionic bond. It is the best example of all the three types of bond which is present in one compound. That's all for today. We will continue in the next class. Thank you.